Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Ranbir Kapoor wishes to direct a film, says wife Alia Bhatt can be the producer. Aamir Khan injured himself during shoot of Lal Singh Chaddha. Atiya Shetty breaks silence on reports of her wedding with boyfriend KL Rahul. रणबीर कपूर ने कहा कि वो नहीं है सुपरस्टार. रणबीर कपूर करना चाहते हैं फिल्म डायरेक्ट. रणबीर कपूर चाहते हैं वाइफ आलिया भट्ट करें उनकी फिल्म को प्रोड्यूस. रणबीर कपूर ने रिसेंटली फिल्म इंडस्ट्री में कंप्लीट किए हैं 15 इयर्स. और इन 15 इयर्स में उन्होंने कई हिट्स और फ्लॉप्स दी हैं. ऐसे में रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो आज भी अपनी फिल्म्स को लेकर नर्वस हो जाते हैं. He said, I wish I could buy all the movies and keep them with me and watch them myself because I'm very scared of judgment. I don't know whether people will like my film or not. When my last film Sanju, which came out 4 years ago, was a big hit. But still, people are saying that this is my comeback film. So I do not understand what is this comeback film. But it is comforting that this film industry has adopted me and considered me a good actor. Now whether the films will play or not, there is nothing in my hand. I will keep hearing that there is a comeback film. Ranbir Kapoor further added that he used to hear that he will be the next superstar in the industry. However, he said he does not consider himself a superstar yet. So you will get all these tags from time to time. You just have to do your work with patience. And I am very much in love with my work. I like the process better than the release of the film. Also, I am lucky that since childhood I have been very patient. That's why I do not feel too insecure. वैसे यही नहीं, रणबीर कपूर ने ये भी बताया कि फिल्म डायरेक्ट करना उनकी विश लिस्ट में है और वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ आलिया भट्ट उनकी फिल्म को प्रोड्यूस करे. रणबीर कपूर said, When I produced Jagga Jasoos with Anurag Basu, I didn't have that experience. I was only producing that film as an actor. So till now, I have not worked as a producer. But yes, I have always wanted to direct a film. In this lockdown, I have also written a story, which I have liked very much. But I don't have that skill to write, so that I can go and share that story with people and make a film with them. But yes, direction is more on my wish list than production. Well, my wife is a producer and is a very good producer, so maybe she can produce my film. ऐसे में देखना ये होगा कि रणबीर कपूर की फिल्म डायरेक्ट करने की विश कब पूरी होती है. आमिर खान ने पेन किलर्स खाकर पूरी की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग. फिल्म लाल सिंह चड्ढा के दौरान आमिर खान हुए थे इंजर्ड. आमिर खान ने अपनी इंजरी को किया इग्नोर. आमिर खान जल्द ही फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे. ऐसे में उनके फैंस को आमिर खान की इस मच अवेटेड फिल्म का इंतजार है. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान इंजर हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग को नहीं रोका. दरअसल इस फिल्म में एक ऐसा सीक्वेंस है जहां लाल सिंह चड्ढा कई सालों तक केवल दौड़ता रहता है. इस लॉन्ग सीक्वेंस के लिए आमिर खान ने जी तोड़ मेहनत की, जिसके बाद भागते हुए उन्हें नी इंजरी हो गई. आमिर खान को इस इंजरी की वजह से फिजियोथेरेपी से भी गुजरना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और पेन किलर्स खाकर फिल्म की शूटिंग को पूरा किया. यानी आमिर खान ने एक बार फिर से ये प्रूव कर दिया कि वो इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं. आमिर खान ने पेन किलर लेकर फिल्म की शूटिंग को पूरा करने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि पैंडेमिक रिलेटेड वायरस की वजह से फिल्म पहले ही डिले हो चुकी थी. ऐसे में आमिर खान बिना टाइम वेस्ट किए इस लॉन्ग सीक्वेंस को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने अपनी इंजरी के बावजूद भी फिल्म की शूटिंग को जारी रखा और इस सीक्वेंस में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी.
आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज होगी और ये फिल्म फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। आमिर खान के अलावा फिल्म में करीना कपूर खान, मोना सिंह और नागा चैतन्य नजर आएंगे। इस फिल्म के अब तक रिलीज हुए सॉन्ग्स को भी लोगों ने बेहद पसंद किया है और उम्मीद है कि फैंस को आमिर खान की ये फिल्म भी बेहद पसंद आएगी। अथिया शेट्टी अभी नहीं कर रही केएल राहुल के साथ शादी। सुनील शेट्टी ने अथिया शेट्टी और केएल राहुल की वेडिंग रिपोर्ट्स पर दिया जवाब। सुनील शेट्टी ने कहा, नथिंग हैज बीन प्लान्ड येट। क्या वाकई अथिया शेट्टी क्रिकेटर केएल राहुल से 3 महीने के अंदर करने वाली हैं शादी? अथिया शेट्टी ने पहली बार केएल राहुल के साथ अपनी इन वेडिंग रूमर्स पर किया रिएक्ट। अथिया शेट्टी और वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल मेंस क्रिकेट टीम केएल राहुल की शादी को लेकर काफी समय से रूमर्स तेज हैं। कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है that they will be getting hitched in the next 3 months. अब इन खबरों पर अथिया शेट्टी ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें अथिया शेट्टी ने लिखा, I hope I'm invited to the wedding that's taking place in 3 months. लॉल। बता दें, अथिया शेट्टी और केएल राहुल के वेडिंग रूमर्स इंटरनेट पर हर तरफ छाए हुए हैं। खबरें ये भी हैं कि दोनों की फैमिलीज भी मिल चुकी हैं to take things forward. A source was quoted as saying Rahul's parents were recently in Mumbai to meet Athiya's family. The couple, along with their families, visited the new house where they will be moving in soon to see the progress. The wedding is expected to take place in the next 3 months in Mumbai. It will be a grand celebration for both the families and every detail of the wedding is being overseen by the bride herself. लेकिन अथिया शेट्टी के डैड सुनील शेट्टी ने भी इन रूमर्स को क्लियर कर दिया है। एक रीसेंट इंटरैक्शन के दौरान जब सुनील शेट्टी से अथिया शेट्टी की वेडिंग प्रिपरेशन किक स्टार्ट होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली इसका जवाब देते हुए कहा, नो, नथिंग हैज बीन प्लान्ड येट। इससे पहले अथिया शेट्टी के ब्रदर अहान शेट्टी ने भी अपनी बहन अथिया शेट्टी और केएल राहुल के वेडिंग रूमर्स को डिक्लाइन किया था। As far as the wedding is concerned, there are no arrangements being made. There is no such ceremony. These are all rumors. When there is no wedding, how can we give you a date? बता दें, अथिया शेट्टी और केएल राहुल अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ओपन है और दोनों का पीडीए अक्सर इनके सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए सामने आ जाता है। Athiya Shetty recently accompanied KL Rahul to Germany where he underwent a surgery for a groin injury. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दोनों के वेडिंग रूमर्स इंटरनेट पर हर तरफ फैल चुके हैं, लेकिन जल्द होने वाली अपनी शादी के इन रूमर्स को अथिया शेट्टी ने क्लियर कर दिया है, जिससे ये भी साफ हो गया है कि अथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी में अभी वक्त है। Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. We have with us Sonu Sood. You had a release recently in Prithviraj. Congratulations. I know it hasn't done the numbers that was expected, but are you kind of hoping for that to pick up? One, and then also as an artist, how much do box office numbers and collections matter to you? Prithviraj is definitely one of the most special films of my career. I thoroughly enjoyed playing Chand Bardai, and people who have seen the film, they've loved it, and they've been getting a lot of calls from them. Of course, we are hoping that the film should do really, really well. But the word of mouth is very, very strong, and I hope it should reflect in numbers also, and it should do good to the producers. Do box office numbers usually kind of get you down, or does it not matter to you that much in the larger scheme of things? If it does, if the numbers ring, well, I think it's good for the film, for the producers, for all the people that work in. But that shouldn't affect you from working towards what your main goals are. The main goals are to entertain people, to do justice to your characters, to enjoy the space you are in, and that's what I do. Every single moment that I'm on the set of
any movie I do, I give my 100%. I think that's the most satisfying experience we have. Unfortunately, the movie has been mired in a lot of criticism and flack, sort of pre and post release. It's, just being called a lot of things. And I want to know, as an artist and an actor, does controversy sort of bother you? Does it kind of get you down, or are you take it in your stride and you sort of kind of go with it? I think when you're on a public platform, you're making films, you should be open to all kind of criticism, or people whatever, if the people praise your work, but it shouldn't affect you. The idea is to be sincere, be loyal to your work, be focused, and keep on giving your 100%, because if you are sincere to your work, people will notice, and if you're not, people will still notice. So I tend to give my 100%. I hope people see that hard work and they appreciate it. You said something very insightful and interesting recently, which was South saves me from doing not bad Hindi films. Otherwise, there comes a phase when you're just doing a film for the sake of being seen in a big film. Do you feel that you've had that phase before, where you've sort of been a part of a movie that you've just done for the sake of it because it's a big film? Or also, do you get a lot of those kind of offers? No, we get a lot of those offers, but I don't do films just for the sake of it. When someone from the non-film background comes to Mumbai, then there are chances that you get corrupted and you get pulled into the system of doing films just for the sake of it, working with a big director or a producer, and you end up doing a wrong film. So I think that I tried my level best not to do it, and I haven't done it for the sake of working with XYZ. I was doing movies down south. I've done so many films down south, and I think that kept me away from doing wrong films, and I could say no to someone. Otherwise, if we were I was just focused in Bollywood, then there were chances that I would have done films that I never wanted to do. So I think that kept me very choosy. Yeah. You did say something about how when you're from a non-filmy background, then you get a lot of antagonist roles or a lot of the villain roles. Has your thing changed on that, your stance, anything on that? No, lately all the roles that I've been getting are all positive roles, larger than life superheroes. I'm starting a very big movie with Zee Studios called Fateh, and there are 2 movies down south. So now people feel that they can't see me in negative roles, which is good. I would say it's kind of a second innings for me, and roles doesn't really matter whether it's a positive or a negative, as long as you can bring a smile on an individual who has spent money to come and see you in the theatres. I think your job is done, and that's what my aim is. Talking about your second innings, lastly, you have literally been called a hero during the pandemic. And I mean, thank you so much for all the work that you have done. You have been loved, and so much adulation has sort of poured in from so many people in India, but also a lot of your friends in the industry, a lot of your colleagues as well. Literal hero is the term that has kind of been used. Do you think that has at all translated into the kind of offers you're getting? And are you really content with the kind of work you're getting for improvement? There's always a scope for improvement in whatever you do, but like I said, sometimes there's a life larger than movies. Whatever I've been doing with a common man, connecting with a needy, changing a life, I think that's the most satisfying experience I ever had. I would say in last 18-20 years of my career, when I did movies, I thought, box office numbers, big numbers, being a hit, giving a hit film was a very, very big thing. But now, changing a life, saving so many lives, I think it's the most satisfying experience of my career. It's like, exploring yourself. And I always say in the innings that I'm playing, there are no light camera. In our movies, it's always light camera action, but there are no lights, no camera, just action. And director is almighty, and I'm playing the most important role of my career. That's lovely. Thank you so much for joining me, Sonu. And here's the best of luck for your second innings. And thank you for all the work that you do. Thank you so much, God bless. Coming up on the show, Ananya Pandey talks about heartbreak after reports of her breakup with Ishaan Khattar and link up with Aditya Roy Kapoor. क्या अनन्या पांडे ने ईशान खट्टर से ब्रेकअप को फाइनली किया एक्सेप्ट? अनन्या पांडे ने किया रिवील किस तरह वो करती हैं हार्ट ब्रेक से डील। और क्या अनन्या पांडे अब किसी और एक्टर को कर रही हैं डेट? अनन्या पांडे इस वक्त टिंसल टाउन की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेसेस में से एक है और बहुत जल्द अनन्या पांडे के करियर की सबसे बड़ी फिल्म लाइगर रिलीज होने वाली है और ये अनन्या पांडे की पहली पैन इंडिया फिल्म होगी।
लेकिन अनन्या पांडे अपनी फिल्म्स और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा न्यूज में बनी रहती हैं। और कुछ महीनों पहले रिपोर्ट्स आई थीं कि अपने खाली पीली को स्टार ईशान खट्टर को कई महीनों तक डेट करने के बाद अब अनन्या पांडे का ब्रेकअप हो गया है। ये ब्रेकअप की न्यूज इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि जिस तरह अनन्या पांडे और ईशान खट्टर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, छुट्टियों पर जा रहे थे, उससे सबको लगा था कि इनका रिश्ता है काफी स्ट्रॉन्ग। लेकिन ब्रेकअप की अचानक आई न्यूज ने सबको शॉक कर दिया था। लेकिन अनन्या पांडे ने कभी खुलकर इस ब्रेकअप पर बात नहीं की थी। लेकिन रिसेंटली अनन्या पांडे ने रिवील किया कि वो भी सभी की तरह रोकर, अरिजीत सिंह के गाने सुनकर और ढेर सारी आइसक्रीम खाकर ब्रेकअप से मूव ऑन करने की कोशिश करती हैं। अनन्या पांडे ने अपने इंटरव्यू में कहा, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु बिलीव्स इन गोइंग थ्रू ऑल द इमोशंस एंड लेटिंग इट ऑल आउट। बाय कीपिंग आवर इमोशंस इन, वी थिंक दैट वी आर बीइंग स्ट्रॉन्ग। We tell ourselves, no, I won't cry. But that suppressing of emotions always catches up to you sometime later. I feel it's okay to cry your heart out and listen to all the Arijit Singh songs that you can. Eat how much ever ice cream you want to and you'll be okay one day. Also, I don't think there's a better medicine than spending time with your best friends. यानी अनन्या पांडे ने ये एक्सेप्ट किया कि उनका ब्रेकअप हुआ था। ये बात अलग है कि अनन्या पांडे ने अपने एक्स का नाम यहाँ नहीं लिया। वैसे आजकल बॉलीवुड गलियारों में रूमर है कि अनन्या पांडे एक्टर आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं, लेकिन इस न्यूज पर किसी भी तरह का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। बात करें अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर की, तो रिसेंटली अनन्या पांडे ने अपने एक इंटरव्यू में अपने लाइगर को स्टार को बुलाया टू हॉट टू हैंडल। अनन्या पांडे ने विजय देवराकोंडा की फिल्म के एक लुक पर रिएक्ट करते हुए कहा, I reacted exactly the same way as everyone else. That's why my caption on that image was, breathe guys, Vijay is too hot to handle. Believe me, there's a lot more coming up. This is just the beginning. Well, अनन्या पांडे अपनी इस फिल्म को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं और लगता है प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ की गुड न्यूज भी अनन्या पांडे अपने फैंस के साथ जल्द ही शेयर करेंगी। सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने लाखों की खरीदी थी राइफल। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने लॉन्ग रेंज राइफल का किया इंतजाम। सलमान खान को मारने की गैंगस्टर बिश्नोई की हर कोशिश हुई फेल। सलमान खान को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने किया एक बड़ा खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि 2018 में उन्होंने सुपरस्टार सलमान खान को मारने के लिए 4 लाख रुपीस की राइफल की थी परचेस। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि 2018 में उन्होंने सुपरस्टार सलमान खान को मारने के लिए 4 लाख रुपीस की राइफल की थी परचेस। दरअसल पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की किलिंग के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की डिमाइस के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई हैज बीन अंडर इंटेरोगेशन, लेकिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार सलमान खान को मारने की नाकाम कोशिश की है और इस बात को उन्होंने कन्फेस भी किया है। And the latest update in the case is the gangster revealing that he had made arrangements to procure a rifle worth rupees 4 lakhs to kill the actor with. During the interrogation by the Delhi Police's special cell, Bishnoi revealed that he wanted to kill Khan over the 1998 Chinkara poaching case in Rajasthan's Jodhpur during the shooting of Hum Saath Saath Hain, और इसके लिए उन्होंने दिनेश दागर नाम के इंसान को लॉन्ग रेंज राइफल का ऑर्डर दिया था। रिपोर्टेडली राइफल का पेमेंट बिश्नोई ने दिनेश दागर के एक एसोसिएट को किया था। आपको बता दें कि इस राइफल को पुलिस ने 2018 में रिकवर कर लिया था। हालांकि इसके बाद भी सलमान खान को मारने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार और कोशिश की। अभी कुछ दिन पहले भी सलमान खान के घर एक थ्रेटनिंग लेटर भेजा गया था, जिसमें सलमान खान और फादर सलीम खान को मारने की धमकी दी गई थी। Apparently, police interrogation में Bishnoi further confessed to sending messages to his associate Sampat Nehra, who was from Rajgarh, to kill Salman Khan.
सोर्सेस के अकॉर्डिंग बिश्नोई ने बताया कि उन्होंने अपने एसोसिएट को सलमान खान को मारने के लिए मुंबई भेजा था, जिसने उनके घर के आसपास रेकी की थी, लेकिन उसके पास उस वक्त सिर्फ एक पिस्टल ही थी, जिसकी वजह से वो सलमान खान पर अटैक नहीं कर पाए। रिपोर्टेडली इसके अलावा ईयर 2020 में बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की किलिंग के लिए एक शार्प शूटर को मुंबई भेजा था और वो भी अपने इरादों में नाकामयाब हो गया। खैर, सलमान खान को मिली थ्रेट के बाद से ही उनकी सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है और सलमान खान को उनके करीबियों से मिली एडवाइस के मुताबिक वो खुद भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि वो कम से कम अपीयरेंस दें।